thickness of the thin film? What is the thin film? 0.5 micrometer. Yes, it is 0.5 micrometer, and it is about 30 times smaller than the thinnest hair. Okay, so we'll see in optical fiber that optical fibers are also of this thickness. Okay, not much, but of the order of this. Now let us consider this thin film and just draw this diagram along with me. Suppose this is the upper side and then keep some distance for this because we have to draw many lines here. And then we have, say, let me use some different color and whatever. Okay. I'm not able to see this. Okay. So let us make normal. Okay. So normal means it is 90 degree. Simple. Okay. So mouse cursor में इसका okay. Let me draw here the normal. And then with respect to normal, we'll talk about the angle of incidence. Okay? So the angle of incidence will be, say for example, yesterday I think we took 30 degree. 50 Yes, degree. sir. Okay, 50 degree. So the angle of incidence was 50 degree. That then this will be just 40. Okay? 40 with respect to the surface. Am I right? So this is 50 degree with respect to surface. Am I right? Or I should go for 40 here. I don't remember exactly. So 40 with surface and 50 is angle of incidence. Okay. 40 with this surface. Okay. So this is 40 degree. Now I will just use same color here. Now this is the angle, the incident ray. Okay. So the name was given like AB, a typical nomenclature. And then we have the same angle as that of this on the reflected side. So reflected will be now this again with respect to surface, so we'll have to go for 40. This is with respect to surface, remember, and therefore the angle of reflection will be 50 degree. This is what we have. This is very simple. So in the direction BC. So this is the angle of incidence. I'm deliberately showing the direction, and this is the angle of reflection. So it will be same. I will just show with I. And then we calculated angle of refraction. So how much was that? Angle of refraction was 30 degree. 40.
30 degree. नहीं, आवाज नहीं आई ठीक से. Maybe you can type. Somebody can type. Okay, 30. Okay. So 30 means this will be with respect to surface. It will be 60. Okay. So this is the angle of refraction here. So let me take some different color here. So this is another path. And then from here it will again reflect back. Okay? And it will reflect back in this direction. So that will be the angle will be again 30 degree, because if this is R, and then we can just have a normal first here. So we can draw the normal here. And then we can have the angle as 60 here. So that is angle of refraction will be now 30 degree. So this is a refracted ray, refracted from another surface. So this is the thin film, say upper surface and lower surface. So inner side of the lower surface, that is where this is reflecting back, and then this will be parallel to this line. So this is just 40 degrees. So I can just go for this. Okay, this same like this parallel. So it will come out as like this. Now to find out whether this is B, C, D, and then E, and say this is M, and say F. So EF is the reflected ray, refracted and reflected ray. So first refraction, then reflection. First refraction and then reflection and then refraction. Okay? So the path that we need to find out is that you can find out by using the perpendicular to this line. So line BC and perpendicular from point E. This is the perpendicular. This is the construction. So that now say EFG. Okay. So this point is G. So whether the phase at point E and G are the same or different, that will decide whether this thin film will appear bright or dark. Okay. Now we are talking about the path difference. I hope you are able to read this. Okay. I mean, on your mobile screen, you can see this. So path difference will be path 1 minus path 2. Just like yesterday we took the example of distance from, say, if you are traveling from Wardha to Nagpur, there are different options. So either you can go by, say, highway, or you can go to Hinganghat first and then take the another highway. So that there will be two different paths. And then the path difference will be the larger minus the smaller one. Okay? So here we consider the first path as BD plus DE. This is BD plus DE and minus BG. Now why we are taking this only? Because we are trying to find out the phase difference between point E and G. Okay. But these two paths are not in the same medium. Now, this is similar to what you can say that if you have two different runners, okay, so this runner is running on, say, tar road. This is tar road, and this is sandy road. Okay, sand. Now, who will win? Number one, number two.
कौन कौन जीतेगा इसमें? नंबर एक टार 1। रोड, हाँ नंबर 1 जीतेगा, इट इज ऑब्वियस, क्योंकि उसको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, ठीक है। बट इफ यू कंसिडर द एफर्ट्स and then you just remove this sand and you just change with tar, ठीक है। अब दोनों की कंडीशन एक जैसी होगी, अब कौन जीतेगा? जिसने सैंड पे प्रैक्टिस की वो या टार पे प्रैक्टिस की वो? हम्म, सैंड पर प्रैक्टिस जिसने की वो। यस, नहीं टार वाला नहीं जीतेगा, नंबर 2 जीतेगा, क्योंकि जब आप सैंड पे प्रैक्टिस करते हैं तो यू पुट मोर एफर्ट्स, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं आपको, और प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। तो मैराथन रनर्स ऑलवेज वो हमेशा ट्राई करते हैं कि सैंड पे उनका अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो देन दे कैन रन ऑन टार रोड और प्लेन रोड मच फास्टर देन द सैंड, ठीक है, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। Now here also, now this is a medium, this is a medium, and this is air. So the light is traveling from B to G in air. I can write here very simply that this BG is in air, whereas this BD plus D, you can see on left hand side with the red color, that is in medium. So it is expected that if this path BD plus D was in air, अगर ये लाइट एयर में ट्रैवल करता मीडियम के बजाय तो ये ज़्यादा ट्रैवल करता, राइट। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, अगर ये सैंड में जो चल रहा है वो उससे बेटर, अगर वो टार पे चलता तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता, राइट। सिमिलरली हियर the velocity of the light is less, medium है, suppose for example the refractive index is say 1.5, then in that case here the velocity of light, say in case of this the velocity of light will be 3 into 10 to the power 8 meter per second in air, C air, whereas C medium will be 2 into 10 to the power 8 meter per second. इसकी स्पीड कम होगी, ग्लास में उसकी स्पीड कम हो जाती है, मीडियम में कम हो जाती है, ठीक है। अगर ये इतने टाइम, जितना टाइम वो ग्लास में चला उतना ही टाइम अगर वो एयर में चलता तो ऑब्वियसली उसका स्पीड बढ़ जाता, राइट। यस तो सर। स्पीड स्पीड बढ़ता तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता। एक्चुअल जो दिख रहा है हमें बी डी प्लस डी इज अ लेस डिस्टेंस, it will obviously cover more distance, and how much time more distance? This is mu times more distance, okay. So this will be mu bd plus d minus bg. Now why we have taken mu? Because we want the comparison to be in the same units or same way. ये तो मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, अगर ये एयर में होता तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता, इससे ज़्यादा ट्रैवल करता। और कितना टाइम ट्रैवल करता? यू कैन जस्ट हैव द इक्वेशन एज म्यू इक्वल टू सी बाई वी, एंड देयरफॉर अगर ये सी से ट्रैवल करता तो वो म्यू टाइम्स ज़्यादा ट्रैवल करता, ठीक है। यू कैन सी हियर, अगर ये मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। अगर ये एयर में जाता तो क्या होता है? 2 इंटू 10 टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5, आ गया 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8, ठीक है, आ गया ध्यान में। एंड दैट्स व्हाई वी आर सॉरी वी हैव टेकन दिस 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीपल ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि टाइम तो सेम है, दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे पहुंच रहे, ये जी पे पहुंच गया, ये ई पे पहुंच गया, ठीक है। ये समझ में आ गया? Yes. Here what are the distance you have taken, just like BD, DE and BG, these are called as geometric distance. Now why geometric distance or geometric path? Because it doesn't think about medium. Just for example, what is the distance between Mumbai and Nagpur? It is 700 kilometers. कौन सा 700?
रियल डिस्टेंस। एक्चुअल जब आप ट्रैवल करोगे तो आप इस गांव से जाएंगे, उस गांव से जाएंगे, देन द डिस्टेंस विल बी मोर। ठीक है। सो द ज्योमेट्रिकल पाथ इज समथिंग लाइक दिस इज से नागपुर एंड दिस इज मुंबई। ओके, so this is the distance. It may be actually less than 700, maybe 600. Okay, aerial distance. You can just find out on Google Map. Okay? But if you say the actual distance, then actual distance may be something like this. Okay, so this will be more. So this is similar to optical path. Actually क्या हो रहा है? तो actually ये हो रहा है, and therefore mu times BD or mu times DE, these are called as optical path. So optical path, you can just write optical path is equal to refractive index into the geometrical path. ठीक है. Now this is physics. This is physics. And now whatever will write after this is just a mathematics, pure mathematics. Okay. So let us see. Now this is again R. This is R. Okay. And what will be this angle? Say BEG. So let me write angle BEG will be equal to कितना आएगा? ये भी 90 है, ये भी 90 है. ठीक है. नहीं, चलो एक एक करके हम पहले BD की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद BD इज इक्वल टू द D. सो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट D. पहले हम BD की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है. एंगल में बाद में लेता हूँ. नाउ लेट अस कंसीडर इन ट्रायंगल BDM. ठीक है. इसको मैं बड़ा कर देता हूँ. क्लियर? BDM, we have this angle as R. ये एंगल R है. ठीक है. And we know that the thickness of the thin film is say T. तो ये साइड हमें पता है. ठीक है. ये साइड हमें पता है. अब इसको कैसे कैलकुलेट करो? इस साइड के टर्म में आप कैसे लिख सकते हो? नाउ यू नो से MD एंड वी हैव टू कैलकुलेट BD. तो BD और MD के बीच में आप क्या रिलेशन ले सकते? एनीवन? BD hypotenuse. हाँ, BD is hypotenuse. Very nice. So this will be MD will be, is it opposite side or adjacent side? Opposite. Adjacent. Adjacent. Opposite कैसे? R एंगल के हिसाब से हम देखते हैं. R के अपोजिट हो जाएगा BM. ठीक है. This is adjacent. This is adjacent side MD. Now adjacent divided by hypotenuse. ये कौन सा रेशियो होता है? Cos. Cos. So I can write here safely that cos R equal to MD or DM divided by BD. DM divided by BD. Now I know DM. DM is T. So T divided by BD. And therefore BD equal to T cos R. T upon cos. T upon T cos. upon cos R. Very correct. जानबूझ के पूछ रहा हूँ मैं. ठीक है. Now this will be same क्योंकि ये भी एंगल R है और ये भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री है. तो दिस टू ट्रायंगल्स आर सेम. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट है. So the same case will be D. So I can write BD equal to T by cos R equal to D.
and therefore mu times BD plus DE. ये क्यों ले रहे हैं हम? ये हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है, ये यहाँ, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1. So this value we should know, mu times BD plus D, and this mu times BD plus D will be mu and T cos R plus T cos R. It will be 2T cos R, ठीक है, 2T cos R. cos का C जो है वो कैपिटल नहीं चाहिए, ठीक है। 2 mu T cos R, sorry 2 mu T by cos R, ठीक है, clear? This is equation 2. Now in this triangle we have to in this equation we have to find out BG. Now BG, where is BG? BG, ठीक है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपको कौन सी वैल्यू पता है? I'll just make it bigger. इसमें कौन सी वैल्यू पता है? थोड़ा सा छोटा। ओके, do you know BG? We don't know. Do you know G? नहीं पता। Do you know BM? Sorry, B पता है क्या? In terms of R, ठीक है, in terms of R. R के टर्म्स में पता है क्या? We can calculate this, क्योंकि हमें एक साइड तो पता है, ठीक है। This is adjacent side and this is opposite side. तो इसके बीच में कौन सा रिलेशन आता है? एडजेसेंट और अपोजिट? साइन। साइन नहीं आता, साइन में वो हाइपोटेनस आएगा, tan आता है, ठीक है। tan, हाँ, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, या उल्टा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट, opposite by adjacent. ठीक है। So this is a tan. So we can convert this BM, we can just calculate this BM in terms of T and tan R. Okay, तो देखेंगे कैसे रिलेशन आता है। तो हमें B की वैल्यू पता है, अब BG की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हमें अगर ये निकालना है तो हमें ये एंगल जो है, ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? कैसे निकालना? Very simple. This is 90 degree. Why? Why this is 90 degree? Normal is there, perpendicular. Normal, very simple. It is normal to the surface. अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 40. हाँ, मतलब in this case if this is considered to be I, it will be 90 minus I, बराबर। अगर ये 90 माइनस I है तो ये कितना हो जाएगा? ये रेड वाला कितना हो जाएगा? I. It will be I, simple, very simple, ठीक है। ये 90 है, ये 90 माइनस I है, तो ये I होना ही चाहिए, ठीक है। Now considering this angle I, you have to find out the ratio of BG and B. तो BG और B का कौन सा रेशियो आएगा? Now this is opposite side divided by, this will be hypotenuse B. So opposite side divided by hypotenuse क्या आएगा? Sin. Sin, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, I hope you can see this figure now. छोटा करने के बाद भी दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ sides. Now in triangle BGE, what we can write is sin of I equal to opposite side is BG, and divided by hypotenuse is B.
ठीक है. And from this what we can write is BG, that is what we want to find out is BE into sine of I. But we don't want all these things in terms of I. We want it in terms of R, the angle of refraction. Because यहाँ पे हमने cos R निकाला, तो इसको भी convert कर लेते हैं. So we already know that sine I divided by sine R equal to mu, and therefore sine I equal to mu sine R, right? And therefore BG will be equal to now BE into mu sine R. Clear? Any doubt? ठीक है. अब हमें BE की वैल्यू निकालना है. फिर से हम ये डायग्राम की तरफ चलते हैं. Now in this case, now BE will be equal to BM plus ME. अगर आपने BM की भी वैल्यू निकाल ली तो आपको ME की वैल्यू उतनी आएगी, सेम आएगी. तो यू कैन जस्ट मेक इट BE इक्वल टू ट्वाइस BM. BM की वैल्यू कैसे निकालोगे? कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा? कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा? दिस इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज 10. ठीक है. बोलो बोलो, डोंट वरी, कुछ नहीं होता. क्या होगा? गलत हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. ठीक है. सो what I do is I take tan R. Sorry, let me write first the triangle. So in triangle BMD, दिख गया? BMD. What I can write is tan R equal to BM, opposite side BM, divided by the MD. But we know MD is T, so this is BM upon T, and therefore BM is T tan R. Clear? Also this is equal to BM और ME सेम है, ये भी एंगल आ रहा है, तो you can just write this is equal to ME, and therefore BE is equal to BM plus ME, which is equal to T tan R plus T tan R, and that is equal to 2T tan R. लिखते वक्त थोड़ा सा क्लियरली लिखना, ये T और ये T थोड़ा अलग दिखना चाहिए. ठीक है. और you just put some dot here. Now this is the value of B, so I can write here BG value. Okay, BG equal to B into mu sin R. I just write here BG equal to BE into mu sin R, and therefore BG equal to B is 2T tan R into mu sin R. Now what is the product of these two, tan R into sin R? So I can write mu, मैंने पहले ले लिया 2 mu T, and this is sin R into tan R. Tan R is sin R upon cos R. सही है. So this is equal to 2 mu T sin square R divided by cos. So this is the value of BG, equation 3. Now we know the equation from equation 2, mu into BD plus D is 2 mu T upon cos R, and BG equal to this 2 mu T sin square R upon cos R. Now we just try to find out the optical path difference, and therefore optical path difference from equation 1, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है ये इक्वेशन को, ये ठीक है, mu into BD plus D minus BG, that is the optical path difference. So let me write here optical path difference. I will just write the equation first. Mu times B क्या था?
BD plus D. Mu times BD plus D minus BG. Now, what is the value of this? Mu times BD plus D. It is mu. यहाँ पे निकाला है 2 mu T upon cos R. Equation 2 से. So this is 2 mu T upon cos R minus, and this 2 mu T sin square R divided by cos R. ठीक है. Now 2 mu T is common, cos R is common, so I just write 2 mu T divided by cos R as it is. Here remains 1, here remains sin square. So 1 minus sin square R. Now what is 1 minus sin square R? Cos. Cos R. Right? Cos R? Cos square R. Cos square R. Okay. So this one cos and one of the cos square that get cancelled out, so we get 2 mu T cos R. This is optical part difference. ठीक है. This is mathematical jugglery. I didn't want to waste your time actually, but I was not able to record it. You can see it again and again, and then you can understand. It's very simple. Now, if this optical part difference is multiple of lambda, then it is bright, and if it is multiple of odd wavelength, half of the odd wavelength, then it is dark. But this is not true. This is not true. There is an additional part difference. Why you are talking about additional part difference? Now you can see here. There is a case 1 where there is a reflection at point B. I'm just talking about reflection. Okay, reflection in the direction of BG. This is 1, and there is a reflection at point D in the direction DE. Okay, are these two same? ये दोनों सेम है क्या? सेम मतलब फिनोमिना सेम है क्या? Now you just think about medium. यहाँ B point पे it is reflecting from the denser medium. This is denser. This is rarer. Okay, this is again rarer. So the light was in a rarer medium and it reflects from the denser medium. But in this case, at point D, it is opposite. The light was traveling from the denser medium and it is reflecting from the rarer medium. Nikhil, please mute your. Okay. So, do you understand the difference between these two? So, the light is reflecting from point B, that is reflecting from the denser medium. Whereas at point D, it is reflecting from the rarer medium. So, there is a difference. Now, what is the difference? Let me show you another diagram. And you have learned this. Okay. पहले आपने किया है. So, suppose this is a denser medium. This is denser. And this is rarer. And the wave is coming from this direction. Now, how does it get reflected? उसमें कोई phase change होता है क्या? कि नहीं होता? And the other one is this. This is rarer and this is denser. And the wave is coming like this. Suppose crust. Then how it reflects back? ये डायग्राम शायद आपने पढ़ा होगा 11th में. पढ़ा है? Yes, no? Yes, sir. हाँ, तो ये क्या होता है? यहाँ पे फेस चेंज होता है, ठीक है? 180 डिग्री से फेस चेंज होता है. The crust become trough. ठीक है? हमने एक ही एग्जांपल लिया. ठीक है? For example, if this is a denser medium and the wave is something like this, it is coming from this direction.
then it will get reflected back as exactly the replica, mirror image of this. इसकी मिरर इमेज आएगी, यहाँ पे क्रस्ट है वहाँ ट्रफ आएगा, जहाँ ट्रफ है वहाँ क्रस्ट आएगा, ठीक है. So this is denser, this is rarer, but if this is rarer and this is denser, और denser medium से अगर ये वेव आ रही है, then it reflects back just like this, जैसे आई वैसे वो reflect back हो जाती है, like this. Okay. That means if the light is incident on denser medium, it changes its phase. फेज कितने से चेंज हो गया? देयर इज अ फेज चेंज, फेज चेंज ऑफ 2 पाई, राइट? यस, नो? हाँ, बी कॉन्फिडेंट. इट इज नॉट 2 पाई. 180 डिग्री मतलब कितना हो गया? 180. जस्ट पाई. Pi. हाँ, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है. सो इफ देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन, अब हम इसको कंसीडर करते हैं एक वेव, ठीक है. दिस इज यूनिफॉर्म एक्चुअली, I am not able to draw it properly. So this is now 0, this is 2 pi, and this is say pi. Okay. Now this is the wavelength. ये wavelength हो गई इसकी. That means the wavelength lambda corresponds to 2 pi. ठीक है. तो pi के लिए कितना आएगा? Lambda by 2. Right. Now this is the additional part difference. Additional path difference. Due to what? Due to reflection from the denser medium. और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है पॉइंट बी पे, ये यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ ये फेज चेंज हो रहा है और यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है. तो अगर ये वेव ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे आके फिर यहाँ पे ई पॉइंट पे और जी पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, अगर ये दोनों का फेज सेम होता है, देन इट विल अपीयर ब्राइट. अगर डिफरेंट होता है तो डिपेंडिंग अपॉन दैट डिफरेंस you will see the different color or different intensity. Okay. Now let us go back to this optical part difference. So our optical part difference was calculated as 2 mu t cos r, but there is additional part difference and therefore corrected part difference. Corrected optical path difference. This OPD means optical part difference is equal to 2 mu t cos r माइनस लैम्बडा बाय 2. अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइनस लैम्बडा बाय 2 क्यों लिया? डिफरेंस ये है ना, तो डिफरेंस ऐड भी कर सकते थे, प्लस लैम्बडा बाय 2 भी ले सकते थे. व्हाई यू आर नॉट टेकन दिस? लेट अस कंसीडर द केसेस एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस केसेस. ओके. सो सपोज केस 1, this optical part difference is multiple of wavelength, then it appears bright. Okay. Right? यही आप लोगों ने पढ़ा है. Now, if you put this condition here, so optical part difference is now mu 2 mu t cos r minus lambda by 2 equal to n lambda. Now, what is the value of n here? Optical part difference is n lambda, then it is bright. What is the value of n here? Go ahead. n की वैल्यू क्या आती है? It is 0, 1, 2, 3, all integer. No, not even number. Not even number. It is the natural number. It is the natural number. I don't know what is called natural or whole number. I don't remember exactly. That is a part of mathematics. So I know that this is 0, 1, 2, 3, 4. Okay.
whatever you call whole number or natural number. I don't remember. Okay. Now here again I put this condition n equal to 0, 1, 2, 3 and so on and so on. And therefore what I can write is 2 mu t cos r equal to, now lambda by 2 is taken on right hand side, so n plus 1, okay, n plus, sorry, half, not 1. So this n plus half lambda, or you can just write taking this 2n here to 2n plus 1 by 2 lambda, or you can write, for example, this is now odd number, okay, 2n plus 1 is always odd number. How? You can just put the value. Suppose n equal to 0, n equal to 0 तो ये हो जाएगा 1, so this is lambda by 2, okay. Now n equal to 1, so 2 plus 1, 3 lambda by 2. So this suggests that this is nothing but the first value is lambda by 2, then 3 lambda by 2, and if you put 2, n equal to 2, 2 to the 4, 4 plus 1, 5, so it's 5 lambda by 2, okay, and 7 lambda by 2, and so on. So if the phase difference between these 2 points, which 2 points? Here, in this diagram. G and E, यहाँ पे अगर इसका फेज डिफरेंस, ठीक है, ये ऐसे आया, तो दी वैल्यू ऑफ से 2 mu t cos r is lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2, then this will appear क्या, बताओ फिर से, ब्राइट और डार्क? ब्राइट. इट इज ब्राइट, रिमेम्बर. और यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो ऑड है, हमने तो पढ़ा था कि ऑड के लिए तो वो डार्क होता है, ठीक है. तो यहाँ पे वो वैल्यू आपकी एग्जैक्टली अपोजिट हो गई. जो डार्क के लिए कंडीशन थी वो राइट हैंड साइड ब्राइट के लिए हो गई, जो ब्राइट के लिए थी वो डार्क के लिए हो गई. क्लियर? नाउ लेट अस गो फॉर केस 2. And here you will understand why we have taken this minus lambda by 2. Okay? Case 2. Case 2 is optical part difference is equal to 2n minus 1 lambda by 2. Okay? Now why I am taking 2n minus 1 lambda by 2? यहाँ पे तो 2n plus 1 lambda by 2 लिखा था. n starts from, you can write 2n plus 1 also. There is no problem. 2n plus 1 lambda by 2. But n will start not in both cases it will be different. Okay, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके रखो, ठीक है. सपोज n इक्वल टू 0 रखा आपने, तो क्या आएगा? n इक्वल टू 0 रखा तो क्या आएगा? 0 माइनस लैम्बडा बाय 2. अब आप मुझे बताओ कि डिफरेंस माइनस में आता है क्या? डिफरेंस जो बोलते हैं हम, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिफरेंस का मतलब भी वही है, ठीक है. बड़े से छोटा आप घटा दो, you just subtract the smaller number from the larger number. That is what the difference is, and therefore this should be always positive. So n should start in this case from say 1. So 1 अगर रखेंगे तो then 1 into 2 is 2. 2 minus 1 is 1. So this is lambda by 2. So this n starts with 1, 2, 3 and so on. Whereas in this case, you can put n equal to 0. तो यहाँ पे अगर n equal to 0 रखते हैं, then this will be lambda by 2. Okay, and in this case it is something like this. You can use any one. Okay. Now let me take the first case, say n equal to 1. Okay, 2n minus 1. So optical part difference. Now I have this optical part difference as 2 mu t cos r, 2 mu t cos r minus lambda by 2. Okay, equal to 2n minus 1 lambda by 2.
Now taking this lambda by 2 on right hand side, now this minus becomes plus. And now you will understand why I have taken minus and why I have not taken the plus. अगर मैं प्लस लेता तो यहाँ पे ये प्लस वाला लेना पड़ता, ठीक है, और मैंने माइनस लिया इसलिए माइनस वाला लिया मैंने. व्हाट इज द डिफरेंस? 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n-1, ये कितना हो जाएगा? 2n-1, लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा बाय 2 है, कॉमन लिखा है तो +1 हो जाएगा एंड लैम्डा बाय 2. Now this is equal to -1 + 1 get cancelled out, 2n into lambda by 2. So 2 get cancelled out. This is n lambda. अब आप बोलोगे कि सर प्लस वाला लेके दिखाओ. ठीक है, प्लस वाला लेके देखते हैं कि सपोज वी टेक 2 म्यू टी cos r plus lambda by 2 equal to 2n plus 1 and lambda by 2. Okay. Now taking this lambda by 2 on right hand side. ठीक है, तो राइट हैंड साइड में लेंगे तो क्या होगा? 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n प्लस 1 -1. -1 किसका? इसका, और लैम्डा बाय. ठीक है, ये समझ में आ गया? अगेन दिस इज -1 + 1 becomes 0 and 2n multiply by lambda by 2, it becomes n lambda. So in both cases it is n lambda. Okay, the difference is that from where you are starting. So we take this condition that you are starting with, say, in this case, you are starting with n equal to 1, 2, 3. Whereas here you start with n equal to 0, 1, 2, 3. Okay? Are you getting my point? So forget about this. We will just take about this condition. Why? Because we have already taken this condition here. यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी कंडीशन लेके ये सॉल्व किया है. ठीक है. Now here, if you talk about this, then say n equal to 1, 2, 3, and therefore the values will be here. The values will be, say, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, and so on. So all these points will appear dark. Clear? So if the optical part difference, that is 2 mu t cos r equal to, say, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, it is dark. If it is, suppose, lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2, then it is bright. ये समझ में आ गया? Sure? 100%? Okay. Now let me ask you simple question. Very simple question. Suppose you see from this side. Okay. You see from this side. यहाँ से आपने देखा. ठीक है? Now, if the thickness of the thin film remains constant, मैं यहाँ पे ऊपर आपके रेफरेंस के लिए ये भी लिख देता हूँ. 2 mu t cos r is equal to, मैथ्स में लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना. Suppose this is n lambda, then this is dark, and if it is 2n plus 1 lambda by 2, it is bright. Now my question is, if the thickness of the thin film remains constant, if the angle of incidence remains constant, then whether this film will appear A, bright, B, dark, C, alternate bright and dark, and D, either bright or dark, but not both. Bright or dark. थोड़ा सा है अपने पास जगह. ठीक, छोटा कर. Either bright or dark, but not both. मतलब अल्टरनेट नहीं रहेगा, या तो ब्राइट रहेगा या डार्क रहेगा. Obviously, there is last option, as you know.
बताओ. Let me go to the chat box. Oh, no, you are not able to see this now. Okay, let me share this window. Okay, now you can see both. Now I can see both chat also and the screen also. क्वेश्चन समझ में आया? सर एक बार रिपीट करो ना प्लीज. फिर से एक बार बताओ. यस सर. ओके, क्वेश्चन ये है कि दिस इज द फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला आपको दे दिया मैंने. मैं फॉर्मूला भी दे दिया मैंने. 2 म्यूटी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्बडा अगर है तो डार्क होता है, अगर 2n+1 लैम्बडा बाय 2 है तो ब्राइट होता है. ठीक है, विल नॉट कंसिडर दी एनी अदर कंडीशन इन बिटवीन. इन बिटवीन अगर है तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. Now tell me, if the thickness of the thin film remains constant, angle of incidence remains constant, obviously the refractive index is also constant, then whether this thin film will appear from this side, thin film will appear dark or bright or alternate bright and dark or either bright or dark but not both. So what is your option? एक बार हिंदी में बता दूं. सर मतलब ये जो फिल्म है वो रिफ्लेक्ट क्या करेगी, वो कि थिन क्या हो जाएगी वो. फिल्म कौन से कलर की दिखेगी, मतलब ब्राइट दिखेगी या डार्क दिखेगी या अल्टरनेट ब्राइट डार्क दिखेगी, या दो में से एक कोई भी हो सकता है, ब्राइट हो सकती है या डार्क हो सकती है, लेकिन बोथ नहीं होगा. प्रतीक हैज लेफ्ट. सर बी. पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स. और ई इज कॉमन जनरल ऑप्शन. नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव नहीं. आईडी के. ओके सर. हाँ, इतना सब समझाने के बाद अगर आईडी के यूज करते तो देन इट इज ऑफ नो यूज. मतलब आपका लेक्चर में ध्यान नहीं था. ओनली वन आंसर. उदय सेज बी. बी इज डार्क. What others? Should I give you more time for this? Should I ask the same question tomorrow? आप सोचो इसके बारे में. नहीं, ऐसा नहीं. It will take time. Okay, some people are answering. Okay, so there are various answers. So I think the best way is let me stop here and you think about this question. Okay, you can see the यस recorded सर. video. Okay, you think about it, and then tomorrow morning we'll take this question at the first.